Good afternoon, everyone. Welcome to the session. I hope I'm clearly audible to all of you. Welcome once again on behalf of the Unacademy CAT-alyst channel. Hope all of your preparations are going well and अच्छे से तैयारी हो रही होगी. Please keep giving mocks and analyzing your performances. Identify your strengths and weaknesses. You must be hearing all the faculty members saying this these days, and it is important. That's the only way going forward. You have to be smart in what you're doing. Know your strengths, know your weaknesses, know where you are good at, know where you are wasting time, and accordingly keep giving mocks and try and improve on these parameters. Okay. Now, as a part of the sessions on November last month, I had completed the must solve question series and a quick revision series में mixture allegation and relative speed का 3 session हुआ था. This month I'm taking you a last mile revision. Already part 1 was done day before yesterday, so if you haven't watched that, you can watch that last mile revision wala session, and this is part 2. So every session will take up some important questions हो या concepts हो which I feel are important for the exam and exam point of view से वैसे questions या वैसा concept उसी तरीका से समझना चाहिए. Once I know this is important, I'll try and definitely share it with you also. Not like any prediction, but over the years what we have seen and what kind of questions have been asked. So in our experience, what all things are important, we're trying to share sharing the same to our classes. Hope it will benefit you the way it did to me. Good afternoon, Prerna. Welcome to the session. Now, this is just a brief background. You can check all these details in the profile section, and you can watch all my free classes on the Unacademy platform using this code. Okay, you can unlock all special classes for free. Okay, you can unlock all the special classes for free. November 6th को All India mock test है. I hope all of you are aware of this All India mock test. So do participate in the All India mock test. Free for all. 3 mock test होंगे 6th को, 13th को and 20th को. Also attend the analysis session that follows up this mock test. This is a course that I recently completed. अभी algebra, geometry, modern maths का भी course चल रहा है. So you can join me for my live courses. And you can get a 10% discount if you are using my code DASLIVE on your Plus or an Iconic subscription. I'll talk about these two subscriptions towards the end of the video. So let us start. I have taken up a few questions today. Questions के साथ I'll also explain the concept. जैसे कि अपना first question है, देखो combination theory का question है. Basic idea of combination and जिसको पता है NCR का मतलब क्या होता है, you can solve this question. But a lot of people sometimes out of stress they skip this chapter totally skip कर देते. So the problem is if you skip the chapter, then you miss out on simple questions like this, and these kind of questions are getting asked in the exam. People have somehow this wrong perception of the exam that all difficult questions are going to be asked in the exam. No, it doesn't happen that way. Maybe 40% or 30% of the questions will be difficult भी बोल नहीं सकते. 20% of the questions are difficult, around 30% to 40% moderate, and the 40% easy. And तुम्हें करने हैं 50% of the questions, तो सिर्फ easy moderate पे भी डील करोगे तो हो जाएगा. तो ऐसे नहीं कि हर चैप्टर का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है वही कैट में पूछा जाता है. इज नॉट लाइक दैट. So that is why it's never advisable to skip chapters. And there are concepts which you can pick up in 10 minutes, 15 minutes, बहुत easily. हो सकता है you are not an expert in that chapter, 10-15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट बना सकते हैं. जैसे देखो, this is from combination theory. Before explaining this, I'll explain the background of this. तो पहले जब भी I'll write this expression NCR. इसका word में try and understand the meaning. It is selection of R things out of N things. Okay, selection of R things out of N things. So if there are N things available, उसमें से तुम R चीजें कितने वे में select कर सकते हो. Okay, for an example, suppose there are 10 boys and you need to select 3 boys. In how many ways can you do that? NC3. Selecting 3 out of 10 boys. कोई भी 3 हो सकता है. All possible selections are included here. And NCR का explanation expansion is n factorial by r factorial into n minus r factorial. Think how easy this is. Just इतना समझने में तो कोई difficulty नहीं है. ठीक है, इसका difficult question हमारा नहीं बन रहा है, no problem. इतना तो समझ ही सकते हैं. NCR का मतलब क्या होता है? People NCR देख के ही छोड़ देते हैं. But it's not that difficult. NCR का मतलब selecting R things out of N things. Just understand this. And for quicker calculations, NC0
is equal to NCN is equal to 1, NC1 is equal to NCN minus 1, NC1 is equal to NCN minus 1 is equal to N, NC2 is equal to NCN minus 2 is N into N minus 1 by 2, and in general we can write NCR is equal to NCN minus R. This is also a very important logic. NCR, ये formula तो मैंने ऐसे लिख लिया, NCR is NCN minus R. That means by example I can write 10C3 is same as 10C10 minus 3 10C7. मतलब क्या है इसका? 10C3 is equal to 10C7. थोड़ा इस पे और elaborate करते हैं, then we'll go to the like explanation part. NCR is equal to NCN minus R. ठीक है, इस पे थोड़ा elaborate करते हैं. Because this gives you a very important logic while solving. मान लो I'll say there are 10 boys. In how many ways can you select 7 boys? You have to select 7 boys out of 10 boys. मैथमेटिकली ये दोनों सेम है. फॉर्मूला वाइज अगर तुम इसको देखोगे, NCR is n factorial by R factorial into n minus R factorial. इसको भी अगर तुम लिखोगे, it is n factorial by n minus R factorial, then n minus R is R factorial. तो दोनों वैल्यू वाइज तो सेम है. अगर समझना है इन वर्ड्स कैसे समझेंगे? If I have to select 7 boys out of 10 boys, I can write 10C7. And by this formula, 10C7 is equal to 10C3. So 10C3 तो हो गया selecting 3 out of 10. So basically this is selecting 7 out of 10, whereas this is rejecting 3 out of 10. तुम जितने वेज में 3 लोगों को रिजेक्ट कर सकते हो, उतने वेज में 7 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो. जस्ट द ऑपोजिट वे ऑफ थिंकिंग. तो समटाइम्स दिस लॉजिक ऑल्सो वर्क्स. मतलब है सेम चीज, जस्ट अ डिफरेंट वे टू लुक एट इट. होप इट इज मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. कॉम्बिनेशन, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड. देयर आर 10 बॉयज इन अ क्लास and 12 girls, and you have to make a team which will have 2 boys and 4 girls. In how many ways can you do that? In how many ways can you select that? पूरा सीधा सीधा simple question. Number of ways is 10C2 because I'll have to select 2 boys out of 10 boys and 12C4. फिर इसको solve कर देंगे. solve करने के बाद जो आंसर आएगा that's a different thing. It's 10 into 9 by 2, 12 into 11 into 10 into 9 by 4 factorial 24. बस इसको फिर आंसर जो भी आएगा, आंसर डजंट मैटर, प्रोसेस समझो, कैलकुलेशन तो कर ही लो. दिस इज द मीनिंग ऑफ NCR. तो इतना भी अगर समझ लो, यू विल बी एबल टू डील विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. कभी कभार बोलेगा देयर आर 30 पीपल इन अ रूम, हाउ मेनी हैंडशेक्स? तो एक हैंडशेक के लिए क्या नीडेड है? टू मेक वन हैंडशेक आई नीड 2 पीपल. जितने वेज में, द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सिलेक्ट 2 पीपल, दैट मेनी डिफरेंट हैंडशेक्स. तो 30 पीपल, 30C2. बोलेगा आफ्टर हैंडशेक दे आर एक्सचेंजिंग कार्ड्स इन बिटवीन देम. So per handshake 2 cards exchanged, so 30C2 into 2. Okay, so that is how the logic will build up on this combination. Now let us come to the question. There are n distinct balls in a bag. We don't know how many. The number of ways of selecting 5 balls from the bag is twice the number of ways of choosing 2 balls. The number of ways of selecting 5 balls is twice the number of ways of selecting 2 balls. NC5 is equal to twice of NC2. बस अभी इसको सॉल्व कर देना है. इसको बस अभी तुम्हें सॉल्व करना है. NC5 is n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 by 1, 2, 3, 4, 5 by 5 factorial, and this is 2 into n minus 1 by 2. So I'm getting n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 is equal to simple 5 factorial 120. So n minus 2, n minus 3 and n minus 4, these three things are consecutive integers basically. So 120 को I can break as consecutive integers in how much? 4 into 5 into 6. So if n minus 2 is equal to 6, n minus 2, n minus 3, n minus 4. तो n का वैल्यू आ जाता है 8.
डोंट इक्वेट n-2 विथ 4 बिकॉज n-2 सबसे बड़ा है तो वो 6 होगा, n-3 उससे छोटा है, n-4 उससे छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर है उसको 6 के साथ इक्वल, तो n इज इक्वल टू 8. सच अ सिंपल क्वेश्चन. एंड ऐसे नहीं दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, कैन बी वेरी मच वेरी लाइकली, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है. एंड कितना टाइम लगा हमको समझने में? 5 मिनट 7 मिनट बस. यू डोंट नीड मच टाइम टू डू दिस. इसके बियॉन्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है एंड यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द चैप्टर, नो वरीज, इतना ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट पूरा चैप्टर स्किप करना इज द रॉन्ग वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इटसेल्फ. ओके, कभी कोई एक चैप्टर एक सेक्शन के भरोसे एग्जाम जाना है फुलिशनेस. यू नेवर नो वहां से सब क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, कितने क्वेश्चन बनेगा. रियलिस्टिकली 60% ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू, एंड इफ यू आर वेरी गुड इन अ सेक्शन तो व्हाई कांट बी यू वेरी गुड इन लाइक द अदर सेक्शन. ऐसा सिलेक्टिवली आई कैन नॉट बी गुड इन एनी सेक्शन. अगर मेरा मैथ्स अच्छा होता तो हर सेक्शन में अच्छा होगा. ठीक है, so never ever do that. Hope this is clear, all of you. People attending live, do feel free to ask wherever you don't understand. Let us come to this part. The difference between total simple interest and total compound interest earned on a certain sum of money fee for 2 years is 364. So to solve this ये question तो अलग way में solve होगा. Just to give you a background, SICI fundamental difference कहाँ पे आता है, क्यों difference आता है? प्रिंसिपल 1000 का लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10% का, एंड इसको SI में देखेंगे, CI में देखेंगे. ईयर 0, ईयर 1 एंड ईयर 2 तक. ठीक है, फर्स्ट ईयर तुम दोनों स्कीम में 1000 रुपीज डाले 10% पे, यहाँ पे भी यू आर पुटिंग 1000 रुपीज एट 10%. आफ्टर 1 year द इंटरेस्ट अर्नड इज 100, अमाउंट बिकम्स 1100, प्रिंसिपल इज सेम 1000 एंड ERR effective rate of return is 10%. Overall 10% return मिला. Second year again my interest is 100, amount is 1200 now. Principal is still the same 1000 and now your ERR is 20%. Overall 20% return I am getting. But if I am coming to compound interest, first year you get 100, amount becomes 1100. Now comes the interesting part. The principal is now changed. When going to the second year, the principal becomes like the amount at the end of first year is the principal for the next year. That is the principal, and that is where it gets different. Amount at the end of first year becomes the principal for the next year. So when I go to the next year, interest on second year won't be charged on 1000 rupees, rather on the new principal. So the new principal is 1100. So 10% charge hoga on 1100, so 110 rupees. Just a second. तो यहाँ पे है year 2 में interest on the second year is 100 rupees, amount becomes 1200 rupees. Now the principal will again change. Now going forward, third year को अगर जा रहे हो तो principal is 1200. And how much is the effective rate of return? Sorry, थोड़ा गलत लिखा. Sorry. Principal has become 1100, so 10% of 1100 is 110. Amount becomes 1210. This is 1210. Effective return is 21%. So just try and understand SI and CI में difference कहाँ पे हुआ. SI में the principal never changed. So every year same 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees. जितना साल आगे जा रहा हूँ उतना 100 ऐड होता जा रहा है. But in CI, the principal is what? Now the amount at the end of first year becomes the principal for the next year. So next year जब जा रहे हो तुम्हारा सारा कैलकुलेशन 1100 पे होगा. 10% on 1100 is your interest. So this got added to the like principal, तो amount आ गया second year का. So that becomes the like principal for the next year. Amount at the end of the year becomes the principal for the next year. इसको और एक वे में अगर तुम देखना चाहो, look at this, 100 divide on 1000, 100 on 1000, तो हमेशा ये 10% पे चल रहा है. यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर वही हुआ 10%, बट ये जो सेकेंड ईयर का 110 है, you can break it as 100 plus 10. This 100 is the interest on the principal.
बट ये एक एक्स्ट्रा 10 आ रहा है एज कंपेयर टू SI. इन CI यू आर गेटिंग दिस एक्स्ट्रा 10. समझ रहे हो? SI में 100 फर्स्ट ईयर, 100 सेकेंड ईयर 100, but in case of CI you are getting this extra 10. What is this extra 10? This 10 is the 10% of the interest of first year. 10% of the interest of first year. तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, मतलब प्रिंसिपल में ऐड हो गया, अमाउंट हुआ, अमाउंट प्रिंसिपल हो गया. तो सेकेंड ईयर जब जा रहे हो, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट चार्ज हुआ ही, बट जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का था उस पे भी इंटरेस्ट लगा. तो इंटरेस्ट चार्ज ऑन इंटरेस्ट, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, मल्टीपल टाइम्स तुम इंटरेस्ट उस पर चार्ज करो. तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ व्हाई SI एंड CI आर डिफरेंट. कहाँ पे अलग होता है? SI इज अ केस ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल, CI इज अ केस ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल. And two important formulas that you should know. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. डिफरेंस बिटवीन SI CI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर सेम प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. In 2 years the difference is P whole into R by 100 का square, and in 3 years P whole into R by 100 का whole cube plus 3P into R by 100 का whole square. Two important formulas to know. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डिफरेंस बिटवीन SI CI फॉर 2 years एंड फॉर 3 years, क्योंकि डिफरेंस तो आएगा ही. 2 साल में कितना आएगा, 3 साल में कितना आएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम. नाउ लेट अस लुक एट आवर क्वेश्चन. दैट इज द सम ऑफ मनी P. तो उसमें क्या हुआ, द टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years. पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लेते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट दिया है 8.33%, which is basically 1/12. That means अगर तुम्हारा प्रिंसिपल है P, आफ्टर 1 year it becomes P into 13/12, and after 2 years it is 13/12 into 13/12 into P. correct. This is a different way of looking at amount. Correct प्रेरणा. तो अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P होल इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n. R अगर 8.33, R बाय 100 1/12, तो 1 प्लस 1/12 13/12 हुआ. 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 13/12 13/12, 2 बार मल्टीप्लाई होगा. So the amount in 2 years becomes 169 by 144 P. This implies compound interest in 2 years is 25 by 144 P. And SI कैलकुलेट हो रहा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 11.11%. तो जब तुम SI कैलकुलेट कर रहे हो, हमारा रेट इज 11.11%. That means 1/9. So total SI earned in 2 years is 2/9 times the principal. And SI minus CI, 25 by 144 P. इनका डिफरेंस वी डोंट नो कौन सा हायर है. दिस इज गिवन एज 364. वन 44 हो गया, तो ये तो 25 P 16 to 32 P. यहाँ पे ये 7 आएगा, 7 5 या 35 52. तो P is equal to 52 4 208 carry 20 58 carry 20 2 52 22 74 7488. करेक्ट, रहना सही है. समझ रहे हो? आई डेंट यूज मच फॉर्मूला, मतलब वही फॉर्मूला जस्ट डिफरेंट वे में यूज किया. PRT by 100 PRT by 100 SI में चला, यहाँ पे A plus 1 plus R by 100 to the power n. You should be able to navigate like through chapters in a question as well. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में they could have given you any other random rate. Why are they giving you this 8.33 and 11.11? Because that can be conveniently used in the question, converting it into fraction.
Hope this is making sense. All of you clear on this part? क्वेश्चंस के साथ मैं थोड़ा थोड़ा बस उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट तुम्हारा रिवीजन हो जाए. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन गया कॉम्बिनेशन थ्योरी SICI. लेट अस कम टू दिस वन. Geometry question. If a square of area 392 square centimeter is inscribed in a circle of radius r, square is inscribed in a circle. तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. इसके अंदर एक स्क्वायर आएगा. क्योंकि ये 90 डिग्री है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हैज टू बी अ diameter. ये पार्ट एज अ प्रॉपर्टी बिकॉज एंगल मेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज. तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल है तो BD को डायमीटर होना पड़ेगा. द डायमीटर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का साइड अगर मैं A लेता हूँ, A square is equal to 392. A is equal to like 14 root 2. अगर A 14 root 2 आता है तो it is like if the side is A, BD is equal to A root 2. So 14 root 2 into root 2, you get 28. Hence the radius is half of BD, 14 centimeters. Easy question. Very easy. Yes or no? एकदम से easy question है सर्कल का. यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या क्या यूज हुआ? एंगल मेड बाय द सेमी सर्कल. तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, angle made by the diameter at the like at the semicircle is always 90 degrees. So never be confused about this part. Angle made by the diameter at the semicircle is always 90 degrees. Okay, hope this is making sense. Just a quick batch announcement. November 10th को ये CAT elite batch start हो रहा है. These are the features that you are going to get. So if you are planning for a subscription with the Unacademy platform, you can go for the plus or an iconic subscription and avail a 10% discount if you are using my code last live. अभी एक क्वेश्चन फंक्शंस का देखते हैं. मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया है, f of x is equal to f of x plus 4 if x is less than 100 and f of x is equal to x minus 2 if x is greater than equal to 100. Okay, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 50. This is the question. फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 50. फंक्शन का क्वेश्चन हो गया. तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मान लो x को
जस्ट सेकंड, मैं f of 99 कैलकुलेट करता हूँ, तो x लेस देन 100, तो इट इज सेम एज f of x plus 4, 99 plus 4 is 103. How much is f of 103? F of x greater than 100, so 103 minus 2 is same as f of 101. So I get f of 99 is 101. And how much is f of 101? X greater than equal to 100 and 101 minus 2, I get it as 99. और एक एग्जांपल देखते हैं, f of 98 same as f of 102. It is f of 100 now, again which is 98. Then how much is f of 97? f of 101, f of 99, ये आता है 97, f of 96, and f of, this is like f of 98, 96, f of 95, f of 95, 95 minus 2, 93. अच्छा, f of 95 में तो और ये वैल्यू पुट नहीं होगा, सॉरी, मिस्टेक. f of 95 में देखो अगेन f लेस देन 100 हो गया, तो f of 95 इज लाइक f of 99. f of 99, का तो डायरेक्ट वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते. f of x लेस देन 100 इज f of 95. ओके, तो ऐसा करके इसका चलेगा. तो you whenever you get these kind of questions, we call it something called as iteration. तुमको डिफरेंट आइटरेशंस कैलकुलेट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस फंक्शन वर्क. तो मैंने 99 से स्टार्ट किया, x को 99 लिए, तो यहाँ पे तुमने 103 तक पहुंचा. f of x plus 4 ना, तो 94 plus 9, f of 99 आ गया. f of 99 is 99, again you get f of 99 which is 99. एंड उसी आइटरेशन में चलेगा, दो ही चीजें चलेगा. तो यहाँ पे देखो, फिर f of मैं 94 मान लो तुम कैलकुलेट करोगे, सेम एज f of 98. how much is f of 98? 98, and f of 98 is how much? 98. so 99, 98, 99, 98 वही चलेगा. so when you see these questions, don't try to immediately summarize the answer, you'll have to calculate a few values. तो मेरे को यहाँ पे ऐसा एक चीज मिला है, आई कैन नोट दैट. ओके, f का अगर मैं इवन वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ एंड f का ऑड वैल्यू ले रहा हूँ, तो गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज. जैसे f का ऑड में क्या आ रहा है? 99 आ गया. ऑड में हाँ, ये 95 में, 97 में, ये सब में, बियॉन्ड दिस 97 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सर ये 97 क्या लिखा? दिस इज ऑल्सो गलत थोड़ा लिखा है, सॉरी माय मिस्टेक. f of 99 है ना, इट इज 99, and f of 98 है, it is 98. so basically I'm getting two values, 99, 98, 99, 98, वही चीज है. I'll repeat again, f of 99 दिया है which is less than 100, so it is f of x plus 4. f of 103, अब x greater than 100 हो गया, तो 103 का वैल्यू है 103 minus 2, 101. फिर से 100 से बड़ा हो गया, तो 101 minus 2, 99.
अब 98 जब निकालोगे तो 102 पहुंचे, 102 से 100 आए, 100 से फिर जब मैं f का इवन ले रहा हूँ, जब इवन ले रहा हो तब तुम्हारा आ रहा है 98 एंड जब ऑड ले रहे हो तब आ रहा है 99। ठीक है, दिस इज व्हाट यू कंक्लूड। पूछ रहा है F50 कितना है, हाउ मच इज F50? इवन है तो 98 will be the answer। समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? Not a difficult question on functions, but very fundamental. मतलब when you are solving questions, functions का lot of times you will see that you will have to proceed in this way, calculate a few values, तब जाके तुम्हें समझ आएगा how the function। ठीक है, करेक्ट करना 98। तो इसी टाइप का try and solve more and more questions, previous year questions especially this year whatever mocks you have given, that also very important। वो questions को बहुत अच्छे से revise करो because those are the areas from which you get maximum questions or maximum idea of the question। तो ये previous year question subject wise mock test format में on the Unacademy platform, you can join by using this code and get a 10% discount। And Let's Crack Verbal is a new verbal channel. If you're struggling with the VRC section, do join this and you'll find the content of very useful content, qualitative questions and all। And the plus iconic subscription I was talking about, iconic you get a few additional added benefits, but depends entirely on your requirement. Either you can take a plus subscription or an iconic. Don't forget to use my code DASLIVE and you can avail a 10% discount on your subscription. Okay. So that is it from my end for this session. Thank you all for joining. Hope you guys like the class. Do let me know in the comment section if you have any suggestions from your end from my side. If you're new to the channel, do like the session and subscribe to our channel and stay tuned for the upcoming sessions. Keep solving, keep practicing. Thank you. Have a nice day.